हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टिकेस जनरल स्टडीज। आई होप आपण माने भलर थिबे। देखंतु आज आमे माने कोन करबा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एलपीसी रिलेटेड किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा जहा कि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसीबो। आपण माने जदि चाहउछन्ती एई परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबाकू तले डेफिनेटली ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्य करि परिबे। ठीक अछि, देखंतु आमे माने तो टॉपिक वाइज एंड सिलेबस वाइज ऑल जीएस पेपर क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करूछु। आपण माने जदि चाहउछन्ती एई परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा ताले डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को फॉलो करंतु। ठीक अछि, चलंतु आज प्रथम क्वेश्चन देखिबा। आज प्रथम क्वेश्चन हेउछि देखंतु हमरो व्हाट आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखंतु हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहले कोन। देखंतु प्रथम देखंतु ए गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखंतु हमर जो सरकार जे गुडी के पॉलिसी से कि परि भाबरे हमरो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करथाय। बी देखंतु हमरो देखंतु हमर जो इकोनॉमिक देखंतु इकोनॉमिक जो एफिशिएंसी को कि परि भाबरे हमरो यार लक्ष्य होछि कि परि भाबरे हमर इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करबा ता सहित स्ट्रक्चरली भाबरे। देखंतु यार सटीक आंसर होछि हमर ऑप्शन नंबर बी। थर्ड देखंतु ए सिस्टम ऑफ सब्सिडीज टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डी देखंतु ए फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट एंड ट्रेड पॉलिसी। देखंतु यार सटीक आंसर होछि हमर ऑप्शन नंबर बी। मन रखथिबे, देखंतु हमर प्रकृत रे हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रो लक्ष्य होछि कि परि भाबरे एफिशिएंसी को इंक्रीज करबा एंड प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऊपर कि परि भाबरे फोकस रखबा। या होछि हमर मुख्य हमर उद्देश्य। ठीक अछि, हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सेति पे ऑप्शन नंबर बी हेउछि करेक्ट। ठीक अछि, देखंतु ऑप्शन नंबर बी हेउछि करेक्ट। ठीक अछि, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फैक्टर बिहाइंड इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। देखंतु हमर कोनोसी गोटे हमर फैक्टर नुही अबाउट बिहाइंड हमर इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। ए बैलेंस पेमेंट ऑफ crisis, B fall of the Soviet Union, C rise of the Green Revolution, D high fiscal deficit। देखो यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी। ठीक अछि, हमरो जो राइज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन या हमरो गोटे फैक्टर नुही बिहाइंड इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। बट देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस होछि हमरो गोटे फैक्टर होते। ठीक अछि, एंड फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन से समय मध्ये सोवियत यूनियन विघटन होइतिला एंड क्राइसिस करथिला। ता सहित डी देखो हाई फिस्कल डेफिसिट मध्ये से समय थिला। या होछि हमर सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रो हमर कोन थिला फैक्टर गुडी को। बट देखो सी हेउछि इनकरेक्ट, मन रखथिबे। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि देखो हमर व्हेन वेयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। केबे हमर भारत रे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराइतला। देखंतु ए 1975, बी 1985, सी 1991, डी 1999। देखंतु यार सटीक आंसर होछि हमर ऑप्शन नंबर सी। 1991 रे हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराइतला। देखंतु इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड 1991 अंडर प्राइम मिनिस्टर पीपी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। से समय रे हमर 1991 रे हमर फाइनेंस मिनिस्टर के थिले डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड हमर प्राइम मिनिस्टर के थिले पीवी नरसिम्हा राव। तांकरी अंडर तांकरी अध्यक्षता द्वारा से समय रे हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराइतला भारत रे। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि देखंतु द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेयर बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल। हमर जो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होइतिला या हमर क्यों मॉडल बेस्ड अटे। देखंतु ए सोवियत सोशलिस्ट मॉडल, बी नेहरूवियन एंड इकोनॉमिक मॉडल, सी वाशिंगटन कंसेंसस, डी गांधीयन मॉडल। यार सटीक आंसर हेउछि देखंतु ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन कंसेंसस। मन रखथिबे। ठीक अछि, हमर जो वाशिंगटन कंसेंसस promoted free market policies including liberalization, privatization and globalization। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि व्हाट डज लिबरलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी रिफर टू। हमर जो लिबरलाइजेशन किपरि भाबरे भारतर अर्थनीति को रिफर करथाय। ठीक अछि, देखंतु ये हमर लिबरलाइजेशन कहले कोन। ठीक अछि, ये देखंतु इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज किपरि भाबरे हमर सरकार जो कंट्रोल टा किपरि भाबरे इंडस्ट्री ऊपर इंक्रीज होबा सहित इंक्रीज होइता। ए देखंतु बी देखंतु रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट किपरि भाबरे हमर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ऊपर किपरि भाबरे सरकार रा रेस्ट्रिक्शन होबा। एंड सी स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किपरि भाबरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सशक्त करिबा। डी एस्टैब्लिशिंग न्यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स किपरि भाबरे हमर देखंतु पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को किपरि भाबरे स्थापन करबो। यार सटीक आंसर हेउछि देखंतु हमर ऑप्शन नंबर बी हेउछि करेक्ट। मन रखथिबे। ठीक अछि, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड पॉलिसी सॉरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन involves reducing government control over the economy and easing trade restrictions and encouraging
प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची देखंतु व्हिच सेक्टर वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय इंडिया's लिबरलाइजेशन इन 1991। which sector was most affected by India's liberalization in 1991। ଆମର ଯୋଉ 1991 ରେ ଲିବରାଲାଇଜେସନ ହୋଇଥିଲା ଏ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ସେକ୍ଟର ଅଧିକାଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ एग्रीकल्चर, बी इंडस्ट्री, सी सर्विस, डी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्री। 1991 and dismantled industrial licensing except in certain sectors leading to rapid industrial growth। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कहले कोन बुझिबा देखंतु ए ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर। किपरि भाबरे जो एसेट कहले हमर संपत्ति गुडी को किपरि भाबरे ट्रांसफर करिबा बिटवीन हमर प्राइवेट टू पब्लिक बा सरकार रु सॉरी किपरि भाबरे बेसरकार रु सरकार को। ठीक अछि। बी देखंतु सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटिटीज। किपरि भाबरे हमर सेल करिबा गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस एंड टू प्राइवेट एंटिटी। किपरि भाबरे सरकार ओन करथुवा जो तांकर जो प्रॉपर्टी को किपरि भाबरे प्राइवेट कंपनी को सेल करिबा। एंड सी देखंतु नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमर इंडस्ट्री को किपरि भाबरे नेशनलाइजेशन करिबा। एंड डी गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। देखंतु प्राइवेटाइजेशन कहले यार सटीक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर हमर बी हेउची करेक्ट। काहे कि ना देखंतु सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटिटीज हमर जो सरकार थिबा जो संपत्ति एसेट गुडी को किपरि भाबरे प्राइवेट कंपनी मानकू सेल करिबा हेउची हमर प्राइवेटाइजेशन मन रखियो। ठीक अछि। प्राइवेटाइजेशन रिड्यूस the role of the public sector in a business activities by transferring ownership of management to private firms। next question देखिबा। next question इफ देखंतु what was the main method of a privatization used in India। what was the main method of a privatization used in India। a complete disinvestment, B public private entities, and C selling shares in public sector enterprises, D merging public sector companies। यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर सी सेलिंग शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखंतु हमर इंडियन गवर्नमेंट यूज्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड पार्शियली सेल ऑफ शेयर प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची देखंतु व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके ग्लोबलाइजेशन कहले कोन बुझिबा देखंतु ए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस, बी एक्सपेंशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, C restriction on foreign investment, D elimination of trade barriers within a country। यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर हमरो ए हेउची करेक्ट। काहे कि ना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस। ओके किपरि भाबरे जदि ग्लोबलाइजेशन हुए उभय देश मानक मध्य ट्रेड रो आदान प्रदान हो ता सहित उभय कंट्री बा देश गुडी कर उन्नति मध्य होई परिबो। ठीक अछि। देखंतु या अलाउ करते फ्री मूवमेंट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ की फीचर ऑफ इंडिया's ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। हमरो जो भारत रो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी रो कोनोसी गोटी हमर फीचर नुहे। देखंतु ये देखंतु रिडक्शन इन इंपोर्ट्स टैरिफ्स, बी encouraging foreign direct investment, C increasing government control in trade, D promoting exports। यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल इन ट्रेड। या हेउची हमर जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी रो या गोटे मुख्य फीचर नुहे। ठीक अछि। बट आ तीनोटी याक हमर इंपोर्टेंट फीचर अटे मन रखिथिए। गोटे होची रिडक्शन इन इंपोर्ट्स टैरिफ्स एंड बी एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड डी हेउची प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची देखंतु व्हाट वाज द फोकस ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ए बैंकिंग सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, B industrial licensing trade and FDI, C labor law and reforms, D digital transformation and infrastructure development। यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड ट्रेड एंड एफडीआई फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 1991 एंड 2000 फोकस्ड ऑन एलपीजी पॉलिसीज। ओके प्रथमे हमर जो 1991 रु 2000 मसिया पर्यंत हमर जो एलपीजी देखंतु रिफॉर्म्स होइतिला जे हमर एलपीजी ऊपर बेस थिला। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची द सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया फोकस्ड ऑन हमर जेतबे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म होला हमर या केउ ऊपर अधिका फोकस कराइतला। देखंतु ए डिजिटल इकोनॉमी, बी फाइनेंशियल सेक्टर एंड टैक्सेशन एंड गवर्नेंस, सी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डी एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल सेक्टर एंड टैक्सेशन एंड गवर्नेंस।
second generation reforms 2000 to 2010 focused on improving banking and taxation and GST and governance financial market. Next question देखिबा next question हेउची what is the aim of structural reforms in the economy? What is the aim of structural reforms in the economy? A. Short-term economic stability. B. Long-term growth and efficiency. C. Reducing fiscal deficit. D. Increasing government employment. यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर बी हेउची करेक्ट. हमर देखंतु लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एफिशिएंसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रो लक्ष्य हेउची किपरि भाबरे लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को इंप्रूव करिबा ता सहित शॉर्ट टर्म फिक्स करिबा कोन परफॉर्मेंस को. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची what is the key challenge of economic reforms in India? What are the key challenge अटे ठीक है of economic reforms in of India, sorry of no in India. ठीक है. A. excessive foreign investment. B. high inflation. C. unequal benefits and social inequality. D. increased public sector employment. एर सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर सी हेउची करेक्ट. unequal benefits and social inequality. Reforms have led to growth but also increased income inequality and jobless growth. Next question देखिबा. Next question हेउची देखंतु which sector was opened up to 100% FDI in 2016 under economic reforms? क्यों sector was opened up to 100% FDI in 2016 under economic reforms? A. railways. B. defense. C. insurance. D. e-commerce. यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर डी ई-कॉमर्स. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची which committee recommended financial sector reforms in India? क्यों कमिटी को सुपारिश द्वारा हमर फाइनेंस सेक्टर को रिफॉर्म कराइछा भारत रे? देखंतु ए मल्होत्रा कमिटी. बी नरसिम्हन कमिटी. सी केलकर कमिटी. डी रंगराजन कमिटी. यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर बी हेउची करेक्ट नरसिम्हन कमिटी. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची which of the following policies is not a part of economic reforms? क्यों पॉलिसी हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रो गोटे पार्ट नुहे? देखंतु ए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1991. बी न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी. सी न्यू ट्रेड पॉलिसी. डी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट. यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर डी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हमर इंडियन हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम एक्ट was enacted in हमर क्यों मसिया रे हमर एफआरबीएम एक्ट को लागू कराइथला? देखंतु ए 1991. बी 1995. सी 2003. डी 2010. यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर सी 2003. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रो देखंतु निम्नलिखित मानक मध्यरु केउटा गुटे रिजल्ट नुहे? ए राइज इन जीडीपी. B. increase in FDI. C. decline in poverty. D. decline in the informal sector. यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर डी decline in the informal sector. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड in which year as a part of economic reforms? हमर जीएसटी को क्यों मसिया रे हमर देखंतु हमर इंट्रोड्यूस्ड कराइतला ता सहित या को किपरि भाबरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पार्ट बोली ग्रहण कराइतला? देखंतु ए 2014. 2017. C 2019. D 2020. यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर बी. ठीक अछि. 2017 अप्रैल मन रखिथिबे. ठीक अछि. एक ठीक अछि हमर जीएसटी को इंट्रोड्यूस्ड कराइतला. ठीक अछि. यातला किछि हमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर. आई होप आपण मानकर प्रैक्टिस रे हेल्प आसीथिबो ता सहित आपण मानकर रिवीजन मध्ये हेल्प आसीथिबो. आपण माने जदि चाहउछथि एही परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबाकू ताले डेफिनेटली ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्य करि परिबे. ता सहित आपण माने भी कमेंट करि परिबे निसंकोच रे क्यों प्रकार वीडियो मध्य आबे माने तयारी करि परिबो. ठीक अछि. सेति पई मु आपण माने ठरो विदाय नेउची. परवर्ती वीडियो रे एही परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर